Okay, so we'll start with a very quick revision of heat transfer. We will not go into much detail. In the last session, we started with heat transfer, और आपको already पता है heat flows from higher temperature region to lower temperature region. There are three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. Conduction में heat is transferred from a region of higher temperature to a region of lower temperature without actual movement of the particles. Particle खुद नहीं जाता. So what happens, as you know, और हम लोग conduction detail में देखने वाले हैं. We want to start with conduction in detail again. So the first mode is conduction, and if you remember, इस mode में क्या था? It is basically applicable to solids and to be specific to metals. तो यहाँ पे if you remember, metals या फिर solids in general have well defined या ordered arrangement of atoms or molecules. So इसको particle बोल रहे हैं हम लोग. And then you heat one end of the rod. मान लो आप A end को heat कर रहे हो, then heat is reaching end B. तो यहाँ पे A end पे जो particles होंगे, they will vibrate faster and also with more amplitude. पहले slow हो रहे थे, फिर आपने heat supply कर दिया, तो heat energy लेके they start vibrating faster and with more amplitude, and while vibrating with more amplitude they collide. और जब collision होगा तो collision is inelastic, मतलब there is transfer of energy. तो यहाँ एक से दूसरे को energy transfer होगा, then the second one starts vibrating faster and with more amplitude, and then it collides with the neighboring, and then it transfers energy, and again ऐसा करते 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 A end से B end तक energy is going to flow, मतलब heat is going to flow. So this mode of transfer is called as conduction. So we will also go on noting down, and then we will see more about conduction. तो सबसे पहले conduction is the process of heat transfer. Is the process of heat transfer from one end to another end, या फिर ऐसा बोल सकते हो from higher temperature region, from higher temperature region lower temperature region, lower temperature region without actual movement of particles of the medium. Right? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. We have to take a rod. So consider a rod. One end of the rod A is heated. So consider a metallic rod. One end, कौन सा end? A. One end of which is heated. अब क्या हो रहा है? This heat is absorbed by particles near end A, and they start vibrating faster and with more amplitude. The particles near end A absorb this heat and start vibrating faster and with more amplitude. अब ये करते करते क्या होगा? Collision. So while doing so, these particles collides with their neighbors and transfer the energy via collision.
right? Then these neighboring particles start vibrating faster and with more amplitude. Then these neighboring particles, these neighboring particles start vibrating faster and with more amplitude. क्या होगा? Thus colliding with next neighbors, with next neighbors, and and transfer their energy, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? This process continues. So this is how energy is transferred from one end to another end. So this process continues and the energy is transferred from one end to other. This process is called as conduction. Up, as I told you in the last lecture, I mean कि क्या होगा ये आइडियली जब तक रॉड का हर एक पार्ट मतलब हर एक सेक्शन सेम टेम्परेचर पे नहीं होता तब तक ये ट्रांसफर ऑफ हीट चलते रहना चाहिए, राइट? तो आइडियली unless each section of this rod is at the same temperature, there should be transfer of heat, but ऐसा होता नहीं है. I told you once. तो ठीक है, तो ideally the transfer of heat must continue until all the sections of the rod are at same temperature, right? But ऐसा कभी होगा नहीं. It takes infinite time. क्यों? Because as I told you, आप एक एंड को हीट कर रहे हो, हीट एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, एक एंड को कंटिन्यूसली हीट मिल रहा है, दूसरा एंड जो होगा वो एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को एक्सपोज्ड है, तो सराउंडिंग जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है. मतलब बर्नर से ए एंड को हीट मिल गया, ए से बी एंड पे हीट आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सपोज है टू द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर. तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो यहाँ से हीट फ्लो हो जाएगा आउटसाइड. मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सेम हो नहीं सकता एज कंपेयर टू एंड ए. तो but it will take infinite time. Thus the transfer of heat, the heat transfer continues until all the sections are at constant temperature, but not the same temperature. मतलब क्या होने वाला है बेसिकली? आइडियली हीट फ्लो तक चलते रहना चाहिए था जब तक ए से लेके बी हर एक सेक्शन इज एट सेम टेम्परेचर, बट इट टेक्स इन्फिनाइट टाइम. तो फिर कब तक हीट ट्रांसफर होगा? जब तक हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता. कांस्टेंट है लेकिन सेम नहीं है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मे बी इसका 100 डिग्री होगा,
उसके बाद के सेक्शन का मे भी 99.9 होगा, उसके बाद का मे भी 99.8 होगा, उसके बाद का मे भी 99.7 होगा। तो टेम्परेचर सेम नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हर एक सेक्शन का कांस्टेंट है। एक बार हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। अभी आपको बुक में नहीं है, बट 12th में यू विल लर्न। क्यों? बिकॉज यू सी द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय एंड ए पर सेकेंड फ्रॉम द बर्नर, एक सेकेंड में बर्नर जितना हीट लेगा, ए एंड जितना बर्नर से हीट लेगा, उतना वो आगे पास करेगा, और उतना ही नेक्स्ट सेक्शन सराउंडिंग को देते जाएगा। मतलब ओवरऑल ओवरऑल हीट, मतलब बिकॉज ऑफ दिस ईच सेक्शन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको वेल बाय द वे इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो जब हर एक सेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहुंच गया, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। याद रखना, ये आगे आपको वापस आएगा। सो thus the heat transfer continues until all the sections are at constant temperature but not the same temperature. यहाँ तक clear? तो next topic that is in the list is if I'm not wrong, it is thermal conductivity. Okay, so next topic जो आपको देखना है उसका नाम है thermal conductivity, but in reality उसमें हम define करने वाले हैं what is temperature gradient. So next topic is thermal conductivity. Conductivity. Okay, now what do you mean by thermal conductivity? Already आपने conductivity ये word पहले सुना है, if you remember. कहाँ पे? Conductivity. Do you remember we studying chapter number 11 electric current through conductors? वहां पे electrical conductivity एक ये word था। अगर नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूँ। Resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area. So resistivity R is rho L by A, where rho is resistivity. इसका रेसिप्रोकल जो आएगा that is conductivity. तो material can be classified as good conductor or bad conductor depending on the value of resistivity or conductivity, right? तो resistivity यहां से आपको मिल जाएगा R A by L, और कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रो L बाय आर ए। आपको ये भी याद होगा, इसको हमने एक यूनिट दिया था, इफ यू रिमेंबर। ये मीटर में है, एल एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर अपॉन ओहम मीटर स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 1 अपॉन ओहम को हमने कुछ एक नाम दिया था, सीमेंस, राइट। गुड। तो अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको ये बताती है व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट करंट। हायर द कंडक्टिविटी मतलब द मटेरियल इज गुड कंडक्टर, लोअर द कंडक्टिविटी मतलब मटेरियल इज बैड कंडक्टर। तो ऑन द सिमिलर लाइंस एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। वहां पे क्या था? कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या है? हीट। और उसको हम बाद में हीट करंट भी बोलेंगे, तो बाद में देखते हैं। तो जैसे आपको मटेरियल को क्लासिफाई करना था, सिग्मा की वैल्यू मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाई होगी तो, और अगर सिग्मा की वैल्यू लो होगी तो बैड कंडक्टर्स। तो ऑन द सिमिलर लाइंस यहाँ पे आप एक पैरामीटर डिफाइन करोगे which will measure the ability of a material to conduct heat instead of current. So thermal conductivity is the measure of ability of a material to conduct या to support heat transfer, ऐसे बोल सकते हो, to conduct heat flow through it, then higher the value of conductivity, thermal conductivity of course, higher the value of thermal conductivity means
the material is good conductor of heat, means the material is good conductor of heat and vice versa. तो इसका उल्टा भी ट्रू है. लोअर द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स द मटेरियल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. You know, best example of bad conductor of heat, you use it on daily basis, aluminium foils, है ना. खाना गर्म रहे इसके लिए क्या करते हो, एल्यूमिनियम में उसको रैप करके रखते हो, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउट, राइट. थर्माकोल बॉक्स, थर्माकोल का जो बॉक्स होता है उसमें कोल्ड ड्रिंक को अंदर रखते हो ना, सो दैट इट रिमेन्स कोल्ड, right. So that these are some examples of bad conductors, not good conductors, bad conductors of heat, right. So bad conductors of heat की बात चल रही है. good conductor, gold, too expensive to do an experiment with. Yes, it's a better conductor compared to aluminum for sure. आयन, आयन का रॉड आप एक एंड पे हीट करोगे, दूसरे एंड पे अपने आप हीट फ्लो होता है आयन, राइट. वेयर एज एल्यूमिनियम का अगर करोगे तो ऐसा नहीं होता है. ओके, सो इवन व्हेन यू नो ये जो ओटीजी ओवन्स होते हैं, है ना, ग्रिल ओवन, तो उसमें आप एल्यूमिनियम फॉइल रख के अगर कुछ गर्म करते हो एंड यू टेक दैट एल्यूमिनियम फॉइल आउट, यू डोंट फील हॉट रियली, राइट. गलती से अगर कुछ और प्लेट रख दिया तो फिर गया आपका हाथ. गुड. और एडिशनली उस ओटीजी में जो रॉड्स होते हैं ना, विच टर्न रेड, दोज आर नॉर्मली आयन. ओके, देन अब लेट अस टेक दिस एग्जांपल ऑफ अगेन द सेम रॉड दैट वी आर यूजिंग. तो अब एज आई टोल्ड यू कि हीट फ्लो कब तक होगा, जब तक हर एक सेक्शन सेम नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाता. सो यू सी द हीट flows from one end to other end of a rod until each section is at constant temperature. This state is called as variable state. This state in which heat flows is known as variable state, right. And once all the cross sections basically of the rod are at या फिर reach constant temperature, then the flow of heat stops. This state is known as steady state. This state is known as steady state. Okay, तो अब in steady state, ऐसा बुक में मेंशन नहीं किया, बट यू शुड नो, इन steady state condition यहाँ का टेम्परेचर मान लो T1 है और यहाँ का टेम्परेचर है T2, where T1 is greater than T2. So you see there is this difference of temperature सेम नहीं है, क्योंकि एक है T1 हायर टेम्परेचर, दूसरा T2 लोअर टेम्परेचर. और मान लेते हैं कि ये जो रॉड है इसका लेंथ है x, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इज फॉलिंग एज यू आर गोइंग फ्रॉम ए एंड टू बी एंड, आप जैसे ए एंड से बी एंड की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो एज यू आर गोइंग फ्रॉम ए एंड टू बी एंड, टेम्परेचर इज फॉलिंग. सो द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, मतलब हर एक मीटर में कितना टेम्परेचर कम हुआ, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज, है ना. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था.
कल भी बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में, यू स्टैंड आउटसाइड इट इज लिटिल कोल्ड। एग्जाम्पल, अभी ठंडी में उल्टा होता है, यू सिट इनसाइड इज कोल्ड, यू गो आउटसाइड इट इज लिटिल हॉट। तो व्हाट इज चेंजिंग? टेम्परेचर विद डिस्टेंस। हो सकता है 10 मीटर में, हो सकता है 10 मीटर में 2 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, राइट? 10 मीटर में, तो ईच मीटर में कितना? 0.2 डिग्री। तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर और व्हाट इज द फॉल ऑफ टेम्परेचर? what is the fall of temperature per meter is called as temperature gradient, right? तो ये याद रखना। so let T1 be the temperature of the rod of end A and T2 be the temperature of end B। हमको पता है T1 is greater than T2, thus the rate of fall of temperature with distance, rate of fall of temperature with distance from end A to end B is known as temperature gradient। जब भी ये वर्ड सुनोगे ना ग्रेडियंट, तो समझ लेना कि डिनोमिनेटर में हमेशा x आने वाला है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विद डिस्टेंस। वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट? सो टेम्परेचर ग्रेडियंट आप डिफाइन कैसे करते हो? टेम्परेचर ग्रेडियंट यू डिफाइन इट एज हायर टेम्परेचर T1 माइनस लोअर टेम्परेचर T2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स। दोनों एंड का डिस्टेंस कितना लिया है हमने? x। तो T1 माइनस T2 बाय x, और डिनोट करने के लिए हम डिनोट करते हैं dt by dx। so this is the notation, correct? and ऐसा यूनिट फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इट इज जस्ट टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, मतलब डिग्री सेल्सियस पर मीटर, राइट? तो ऐसा यूनिट यू ऑलरेडी नो। गुड, देन यहां तक क्लियर? गुड। अब व्हाट वी हैव मिस्ड, अभी तक एकदम क्लियर होना चाहिए कि कंडक्शन क्या है, राइट? देन थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमको क्यों लगने वाला है? बिकॉज यू वांट टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसका कम है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड व्हाइल डूइंग सो आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट भी डिफाइन कर दिया। टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन करने से पहले हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें हमने वेरिएबल स्टेट मेंशन किया था। वेरिएबल स्टेट मतलब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, हमने अभी तक कितना हीट फ्लो होगा, मतलब क्वांटिटेटिव बात ही नहीं की। वी हैव नॉट सेड कि कितना हीट फ्लो होगा, तो उसके लिए है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इट टेल्स यू कि एक एंड से दूसरे एंड के बीच में हीट फ्लो हुआ कितना, और वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। तो दैट इज अंडर अ टॉपिक कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का लॉ, इट टेल्स यू हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्यूब ले लेंगे। यू कैन ऑफ कोर्स टेक अ रॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रॉड भी ले सकते हो, बट क्यूब लोगे तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यू नो क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है ना आपको? ये हमारे पास एक रॉड है, इसको मैंने कट कर दिया, तो यू सी सर्कल, तो क्रॉस सेक्शन इज सर्कल। तो इसका जो एरिया है, अब अगर बैक एंड अगर हायर टेम्परेचर पे होगा और फ्रंट एंड लेस टेम्परेचर पे होगा, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करेगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उतना हीट फ्लो ज्यादा। ये सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें भी हमने देखा था।
है ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया पे भी डिपेंड करता है वो। देन तो वो अगर आपको समझना है तो इट इज बेटर टू टेक क्यूब, इट इज नॉट कंपल्सरी, आप चाहो तो एक रॉड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अभी बुक का अप्रोच है, मैं वही यूज करने वाला हूं। तो लेट अस कंसिडर अ क्यूब। तो यू हैव अ क्यूब, something like this, okay। एक क्यूब है, लेट्स टेक, और आपको पता है क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर, राइट। लेट अस टेक द साइड लेंथ टू बी x, मतलब एरिया ऑफ ईच फेस इज एक्स स्क्वायर, और एरिया मान लेंगे a है, ईच फेस का एरिया इज a। इसको ऊपर ले देता हूं, मान लो एक एंड इज एट टेम्परेचर T1 हायर टेम्परेचर, और दूसरा एंड इज एट टेम्परेचर T2 विच इज लोअर टेम्परेचर। और ये जो फेस है इसको नाम भी दे देते हैं, लेट अस से फेस 1 और ये फेस 2। फेस 1 और फेस 2 में मिनिमम डिस्टेंस x, मिनिमम मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डिस्टेंस तो आप इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक भी मेजर कर सकते थे, दैट इज नॉट मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, मतलब समथिंग लाइक ये वन ऑफ माई हैंड इज वन फेस ऑफ क्यूब एंड अदर इज फ्रंट अपोजिट, राइट। तो इसमें अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं जो पहले एंड को भी परपेंडिकुलर है और दूसरे को भी परपेंडिकुलर है, तो दैट इज मिनिमम डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। गुड। तो अब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट करने से पहले पहले हमने जो जो कंसीडर किया है उसको मेंशन कर लेंगे। व्हाट वी हैव इज अ क्यूब, सो कंसीडर अ क्यूब, consider a cube of side length या फिर length of h, side length x, right। Let T1 be the temperature of phase 1, वन नाम दे दिया है तो 1। T2 be the temperature of phase 2, temperature of phase 2। Let T1 is greater than T2। और एक चीज जो मेंशन करना रह गया, एरिया, ठीक है। लेट A बी द एरिया ऑफ ईच फेस, लेट A बी द एरिया ऑफ ईच फेस। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि क्यूब का हर एक फेस है स्क्वायर, साइड लेंथ है एक्स, तो एरिया इज एक्स स्क्वायर। गुड। देन अब according to law of thermal conductivity states that, सबसे पहले this is really important, this one, क्योंकि एक फेस हायर टेम्परेचर पे है दूसरा लोअर टेम्परेचर पे है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट हीट विल फ्लो। अगर सेम टेम्परेचर पे होता तो हीट फ्लो होता क्या, नहीं, तो हीट फ्लोज। तो कितना हीट फ्लो, Q, कैपिटल Q, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी the amount of heat, capital Q, flowing from phase 1 to phase 2 is directly proportional to, it depends on actually 4 things। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। so you can say according to, या फिर law of thermal conductivity states that, book to book vary करता है, how you want to write it down। law of thermal conductivity states that the amount of heat flowing between या फिर from between two parallel faces of a cube is number one directly proportional to
area of each face, which is A, है ना, जितना एरिया ज्यादा उतना हीट फ्लो ज्यादा। ईच फेस लिखने की जरूरत नहीं है, ई क्योंकि सबका तो एरिया सेम ही होगा, क्यूब है, तो यू कैन जस्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ फेस। नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to the difference of temperature, मतलब to the temperature difference between the two faces, then number 3, very important, it is the amount of knowledge you gain is the amount of time you're awake in the class. तीसरा है ये, तीसरा, the amount of heat flows is directly proportional to the amount of time for which the heat is flowing, है ना। आपके पास भी तो heat ही flow हो रहा है ना, physics generates heat normally, तो ठीक है, jokes apart, तो it is directly proportional to the time for which the heat flows, तो 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज x। दो फेसेस का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम हीट फ्लो होगा, राइट। 10 नंबर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the perpendicular distance between the two parallel faces. Good. तो अब ये सबको मर्ज कर दो, so therefore Q is proportional to number 1 area, number 2 difference of temperature, number 3 time, and number 4 inversely proportional to x। ये मिल गया आपको लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देन व्हाट यू हैव इज, अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं k, a t1 माइनस t2 क्या था, t बाय x। अब पहले k को रीअरेंज कर लेते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। k इज इक्वल टू qx a t1 माइनस t2 into t, where k is constant of proportionality known as coefficient of thermal conductivity। इसको coefficient of thermal conductivity बोलते हैं। गुड, ऐसा यूनिट तो आप यहीं से बना सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन डिफाइन व्हाट इज के। अभी के डिफाइन करना है तो एक काम करेंगे, पहले के डिफाइन कर लेंगे, बाद में इसका यूनिट की बात करेंगे हम लोग। वैसे तो दिख ही रहा है, जूल, मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस एंड टाइम मतलब सेकेंड। मतलब व्हाट यू सी इज जूल, मीटर स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड। कैंसल तो इट इज जूल पर सेकेंड। You know what is this? जूल पर सेकेंड पता है क्या होता है? एनर्जी पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर, राइट। तो हम बाद में देखेंगे उसका यूनिट, और आई कैन पुट इट एज असाइनमेंट फॉर यू टू डू दिस, डायमेंशंस एंड एसआई यूनिट। एनीवेज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अब k को डिफाइन करना है। अब k में qx a t1 माइनस t2
और t ऐसे 5 पैरामीटर है। तो एक काम करेंगे, k को डिफाइन करने के लिए हम q को छोड़ के q के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वेरी सिंपल रीजन। यू सी, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताता है? अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, राइट, है ना? तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग बिटवीन टू पैरेलल फेसेस, मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट? Q। तो Q को 1 कर दिया तो मतलब ही नहीं बनता है फिर। तो Q की वैल्यू को छोड़ के सेट एवरीथिंग एज 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इफ x इज 1, मतलब साइड लेंथ इज 1 मीटर, so if x is 1 meter, then what else is? Area is 1 meter square. T1 minus T2 is 1 degree Celsius. Small t is 1 second. तो अगर ऐसा किया तो आपको मिल जाएगा K equal to Q, क्योंकि बाकी सब हो गया 1। तो अब coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat flow for 1 second, क्योंकि टाइम क्या था? 1 second, right? Through a cube whose faces are at a perpendicular distance of 1 meter, और एरिया भी क्या है? 1 meter square, तो through unit area, and when the temperature difference is 1 degree Celsius। तो डिफाइन कैसे करोगे? अगेन बुक में लिखने का तरीका अलग अलग है। What have you understood उतना लिख दो, K equal to Q, बट कब? जब x की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K is defined as the amount of heat flow for 1 second between two faces of a cube which are 1 meter apart and have a temperature difference of 1 degree Celsius। हो गया डिफाइन, खत्म। So you can write it like this. Thus coefficient of thermal conductivity can be defined as the amount of heat flow for 1 second through a distance of, या फिर between the parallel faces of cube which are 1 meter apart and have temperature difference of 1 degree Celsius। This is how you can define। तो ये एक डेफिनेशन है, एंड एज आई टोल्ड यू लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इट्स जस्ट थोड़े से वर्ड्स यहाँ के वहां करके हो सकता है, नॉट एन इशू। लेकिन और एक तरीका भी है, विल सी व्हाट इज दैट वे आउट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन 1 है इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, rearranging equation number 1, what you can do is, पहले तो equation number 1 ले लेते हैं यहाँ पे। this is equation number 1, या तो this one is better to take। तो अब what you can do is, ये जो है ना इसको उठा के यहाँ रख दो। तो ये बन गया Q by T। अब ये जो Q by T है इसको एक नाम है। यू रिमेंबर व्हाट इज करंट? यू रिमेंबर करंट कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या अपॉन टाइम है? हीट अपॉन टाइम। तो जैसे आपने उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला था, इसको आप बोलोगे हीट करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट अपॉन टाइम की जगह पे, सॉरी चार्ज अपॉन टाइम की जगह पे क्या है? हीट अपॉन टाइम। तो इसको हम बोल देंगे, या तो डिनोट करोगे H से
या फिर सम बुक्स डिनोटेड बाय पी, पी कंडक्शन ऐसा लिखते हैं उसको. सो दिस इज इक्वल टू पी कंडक्शन, राइट. देन this H or P conduction is known as heat current, and is the rate of heat flow. क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम जैसे था, रेट ऑफ चार्ज फ्लो था करंट, यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो है क्योंकि हीट अपॉन टाइम है. एंड इज द रेट ऑफ हीट फ्लो. अब यही जो इक्वेशन है इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो इन कैलकुलस फॉर्म. यू नी रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस. चैप्टर नंबर 2 में दो पार्ट्स थे. एक था मैथमेटिकल मेथड्स में दो पार्ट्स थे. एक था वेक्टर्स एंड कैलकुलस. कैलकुलस में दो पार्ट्स थे, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, राइट. तो तभी आपको बताया था मैंने कि जब वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ समथिंग, जैसे टेम्परेचर चेंजिंग विथ डिस्टेंस, तो क्या लिखते हो dt by dx. व्हेन डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विथ टाइम, dx by dt, इसको बोलते हो वेलोसिटी. वैसे ही इन कैलकुलस फॉर्म ये जो q by t है इसको लिख सकते हो dq by dt, है तो वही, राइट. सिर्फ dq by dt, dq मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, dt स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. तो सिर्फ q by t को क्या लिखोगे, dq by dt. k तो कांस्टेंट था, a एरिया तो कांस्टेंट था, t1 minus t2 by x, dt by dx. तो dt by dx only with one minus sign here, minus q. Negative sign tells you that heat is flowing in the direction of decreasing temperature. ऐसा ही हो रहा था ना, हीट कहां से कहां फ्लो हो रहा था, ए से बी. ए एंड क्या था, हायर टेम्परेचर पे, बी एंड क्या था, लोअर टेम्परेचर पे. तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर. 100 डिग्री एक तो दूसरा 20 डिग्री, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम 100 डिग्री टुवर्ड्स 20 डिग्री, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ decreasing temperature. So negative sign indicates that heat flows in the direction of decreasing temperature. अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो मैग्नीट्यूड वाइज यू कैन राइट डाउन, माइनस से हटा देना. व्हेन यू टॉक अबाउट जस्ट मैग्नीट्यूड, तो यू डोंट वरी अबाउट डायरेक्शन, जस्ट रिमूव दिस, राइट. अब अगर एज आई टोल्ड यू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये एक डेफिनेशन है, दूसरा भी कर सकते हो. इफ a इक्वल टू 1 क्या, मीटर स्क्वायर, ऑफ कोर्स 1 मीटर स्क्वायर, एंड dt by dx is 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस पर मीटर टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस. देन यू हैव k a1 dt by dx 1 इक्वल टू dq by dt. तो ये हो गया उसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का. Thus, coefficient of thermal conductivity can be defined as the rate at which the heat flows through unit area when the two ends have unit temperature gradient. Temperature gradient है ना ये, और वैल्यू क्या है 1. तो what is temperature gradient value 1, तो डिफाइन कैसे करोगे. Thus coefficient of thermal conductivity can also be defined as the rate of heat flow, right, through unit area, मतलब per unit area, per unit temperature gradient. ये उसका हो गया alternate definition. ये easy है
तो क्या बोलना है, के इज क्या क्या दिखता है हमको, के dq by dt मतलब रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग। thus coefficient of thermal conductivity is defined as the rate of heat flow through unit area मतलब per unit area per unit temperature gradient। good, डन यहां तक। सो अगला टॉपिक एंड न्यूमेरिकल वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन।